अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? मेरे अटेंडेंस का मसला बना हुआ है सर, काइंडली वो तो सही कर दें। यार कर देंगे, आप हर लेक्चर में अटेंडेंस का इशू शुरू हो जाता है आपका है? मैं तो सर कोई बोला ही नहीं है, मैं तो फर्स्ट टाइम क्लासेस बोल रहा आप हूँ सर। अटेंड नहीं करते और हर वक्त मुझे गिला करते रहते हैं। मेरे पास स्क्रीनशॉट्स हैं सर, मैं सेंड करता हूँ। सर क्लासेस हम अटेंड कर रहे हैं जितना हो सकता है सर, लेकिन कभी कभी काम भी पड़ जाते हैं, घर में कोई खत्म वगैरह है। Today's our topic of discussion is powers of American president. There is no office in the world today that carries with it greater constitutional power and greater general responsibility than the American presidency. Time and events, law, and personality have built the presidential office into an unparalleled position of national leadership and world prestige. Conceived by its creators primarily as a chief magistracy, as the supervisor of administrative services, it has become a symbol of national unity and the center of national authority. Its rise to its present status has been a progressive development, not without interruptions through alternating periods of national calm and national crisis. All sorts of questions and problems have projected themselves into public discussions, some of them into legal action concerning its structural details, the extent of its powers, and its relations with the other branches of the government. It has been one of the least static and one of the most controversial elements in the entire national government structure. It is a great office, and the necessarily brief treatment accorded it here will hard to do it adequate justice. According to the author of the book and practice in the United States of America and the powers provided in Constitution of United States of America, the American president is most powerful president in the world. No other president in the no other president in any democratic country of the world have powers more than the American president. As we know, the American president is a president of country which is also considered the superpower of the world.
So in United States of America, there is no other uh, authority who enjoys powers like the President of United States of America. तो आथर यहाँ पे ये कहता है कि उसकी अनपैरेलल पोजीशन है, यानी उसके पैरेलल कोई भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर नहीं है, और ना ही नेशनल लीडरशिप में भी नहीं है, मुल्की लेवल पे, कंट्री लेवल पे, और वर्ल्ड लेवल पे भी उसको जो उसकी पोजीशन है, जो उसको प्रेस्टीज हासिल होती है, वो किसी और प्रेसिडेंट या किसी और कंट्री के प्रेसिडेंट को नहीं के पास नहीं है। तो जो क्रिएटर्स ऑफ या फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे, उनकी इंटेंशन यही थी कि ये जो पावर्स हैं यूएसए के अंदर, इसको एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के तहत किसी एक बंदे को पावर्स जो है वो ग्रांट कर दी जाए, ताकि उसको अफेयर्स ऑफ द स्टेट जो रन करने में किसी किस्म की मुश्किल पेश ना आए। ये वही कंसेप्ट है जो इस्लाम का कंसेप्ट है। कि इस्लाम के अंदर अगर आपने कभी स्टडी किया हो या किसी मौलाना से ये सुना हो कि अल्लाह ताला ने हमेशा जो अपनी रहमतों के जो वादे किए हैं वो जमात को किए हैं, यानी एक जमात होनी चाहिए और जमात का एक अमीर मुकर्रर होना चाहिए। तो ये है वो कंसेप्ट इस्लामिक जो यूएसए ने अडॉप्ट कर लिया है, सेंट्रलाइज्ड पावर सिस्टम। तो लेकिन वो जो कह लें कि दुनिया के अंदर वो डेमोक्रेसी जो हमारी पाकिस्तान के अंदर है, डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स जो है, उसको प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन अपने यहाँ उन्होंने वही रखा हुआ है जो इस्लाम का कंसेप्ट है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी मदीना की जो स्टेट है, तो वो उन्हीं के पास सारे इख्तियारात होते थे। तो वो मतलब डिस्कस करते थे अपने कोई चंद जो पहले इल्म और बाशऊर साहिब शरीयत जिनको वो समझते थे कि इनको इतनी समझ बूझ है कि इनसे मैं मशवरा कर सकता हूँ। वैसे तो उनको ज़रूरत नहीं थी मशवरे की, लेकिन फिर भी उनके जो साथी जिनको हम सहाबा कराम कहते हैं, वो उनके साथ होते थे। जैसे जंग खंदक आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो उसका जो मशवरा दिया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो थे एक साहबी हजरत सलमान फारसी। क्योंकि वो फारस यानी ईरान से बिलोंग करते थे, तो ये खंदक का जो कंसेप्ट फारस के अंदर मौजूद था लेकिन अरब में नहीं था। तो फिर ये उन्होंने मशवरा दिया, तो उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंडोर्स किया और उसी के तहत वो जंग लड़ी गई। तो ये है सेंट्रलाइज्ड पावर सिस्टम जो यूएसए के अंदर इस वक्त नाफज है। तो इसी के तहत यूएस का जो प्रेसिडेंट है उसके पास बहुत ही ज़्यादा यानी पावर्स हैं। वो और कॉन्स्टिट्यूशन ने भी उसको पावर्स प्रोवाइड की हैं, और उसके साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम जो प्रैक्टिस चल रही है, तो जो कुछ पावर जो है प्रेसिडेंट जो है इम्प्लाइड लैंग्वेज से खुद एक्सट्रैक्ट करता है, और कुछ पावर्स जो है वो कर्टेल कर लेता है। तो अगर
دوسرے جو آرگنز آف دی اسٹیٹ جو اس کو پروٹیسٹ نہیں کرتے تو وہ پھر ان فیوچر وہ سمجھ لی جاتی ہیں کہ یہ پاور جو پریزیڈنٹ جو ہے یہ یوٹیلائز کر سکتا ہے. تو ان میں سے ایک جو مثال ہے کہ جو وار ڈکلیئر کرنی ہوتی ہے دوسرے ملکوں کے ساتھ تو وہ کرنی ہوتی ہے کانگریس نے. لیکن ہسٹری کے اندر کچھ پریزیڈنٹ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے کانگریس کو بائی پاس کرتے ہوئے ملکوں کے ساتھ وار ڈکلیئر کی. تو لیکن کانگریس جو تھی اس وقت اس نے ایز سچ پروٹیسٹ نہیں کیا کہ جو ہماری کانسٹیٹیوشنل پاور ہے اس کو ایکسرسائز کر رہا ہے پریزیڈنٹ بائی گوئنگ بیونڈ ہز جورسڈکشن. تو اس لحاظ سے امریکن پریزیڈنٹ جو ہے اس کو موسٹ پاورفل پریزیڈنٹ آف ورلڈ کہا جاتا ہے. تو اب تک جو پریزیڈنٹ کے پاس جو اتنی پاور اس کے پاس ہیں یہ آپ پہلے سے ایک دم نہیں ان کو مل گئی نہ ہی ایک ہی ٹائم پہ ان کو گرانٹ کی گئی ہیں. یہ پاور جو ہے ود دی پیسج آف ٹائم اینڈ پروگریسو جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے تحت یعنی ناٹ وداؤٹ انٹرپشنس. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ود دی پیسج آف ٹائم جو پاورز وہ ایکسرسائز کرتے رہے جو ان کی نہیں تھیں تو پھر کیونکہ ان کو پھر بعد میں انٹرپشن نہیں ہوئی. اگر انٹرپشن نہیں ہوئی پروٹیسٹ نہیں ہوا تو وہ پھر یہ پریزیڈنٹ جو ہے اس کو ایز اے اپنا رائٹ سمجھ کے ہی ایسی پاورز کو ایکسرسائز کرتے ہیں اور کر رہے ہیں اور فیوچر کے اندر بھی کرتے رہیں گے. Executive powers of the President, Chief Administrator. The President is the head of the national administration. All executive actions of the Republic are taken in his name. He is responsible for the enforcement of the federal laws and treaties with foreign states throughout the country. He sees to the implementation of the decisions of the courts and enforces the constitution and laws of the country. For the performance of these functions, he sends directions to the various departments in the charge of the executive functions. He is assisted by his own cabinet, the members of which are the heads of the various departments. The ministers are appointed by the President and they remain in office so long as he is pleased with their work. The Cabinet has been described as the President's family and he can override their decisions whenever he likes. تو جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا کل کے لیکچر میں کہ پریزیڈنٹ آف یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ از head of the state and as well as head of the national government. تو جو نیشنل ایڈمنسٹریشن ہے اس کا ہیڈ ہوتا ہے پریزیڈنٹ اور جتنے بھی ایگزیکٹو ایکشنز ایکسرسائز کیے جاتے ہیں ان دی ریپبلک یا ان دی یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ وہ کیے جاتے ہیں ان ہز نیم. جسٹ لائک ان یونائٹیڈ کنگڈم جتنے بھی ایگزیکٹو ایکشنز کیے جاتے ہیں دے آر ڈن اور دے آر ایکسرسائزڈ ان دی نیم آف کوئین. تو حالانکہ کوئین کا کوئی عمل دخل تو ہوتا نہیں ہے اور جو کسی بھی کام کے اندر کسی ایگزیکٹو میں یعنی وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کرتی ان دی افیئرز آف دی گورنمنٹ
تو وہاں پہ جو گورنمنٹ کا ہیڈ ہے وہ تو ہوتا ہے پرائم منسٹر. بٹ جتنے بھی کام کیے جاتے ہیں وہ یو کے اندر وہ کیے جاتے ہیں ان دی نیم آف کوئن. تو یو ایس اے کے اندر جتنے ایگزیکٹو ایکشنز ایکسرسائز کیے جائیں گے they shall be exercised in the name of president. He is responsible for the enforcement of the federal laws and treaties with foreign states throughout the country. اور president جو ہے اس کے he is responsible for all treaties made with foreign countries. یعنی ان کو انفورس کرنے کے لیے اور جتنے فیڈرل لاز ہیں یا ٹریٹیز ود فارن کنٹری اسٹیٹس کے ساتھ بنائے گئے ہیں ان کی انفورسمنٹ بھی پریزیڈنٹ نے ہی کروانی ہے. He sees to the implementation of the decisions of the court and enforces the constitution and laws of the country. تو جو ڈیسیجنز آف دی کورٹ ہیں ان کی امپلیمنٹیشن بھی پریزیڈنٹ آف یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے ہی کروانی ہے. اور اس کے بعد جو کانسٹیٹیوشن ہے اینڈ ادر آرڈینری لاز آف دی یونائٹیڈ اسٹیٹس ہیں ان کی انفورسمنٹ بھی پریزیڈنٹ نے ہی کروانی ہے. تو پاکستان کے اندر جو نیشنل گورنمنٹ کا ہیڈ ہے ہی از پرائم منسٹر. اگر آپ تھوڑی بہت ہسٹری میں ریسنٹ ہسٹری کے اندر جائیں تو جسٹس افتخار محمد چودھری چیف جسٹس آف فارمر چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان انہوں نے اس وقت کا جو پرائم منسٹر تھا ان کو یہ آرڈر کیا یعنی ایک فیصلہ کیا جس میں انہوں نے پرائم منسٹر کو کہا کہ آپ سوئس بینکس کو خط لکھیں اگینسٹ دین پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کہ ان کو خط لکھیں گے ان کے جو اکاؤنٹس ہیں سوئٹزرلینڈ کے اندر ان کی ڈیٹیل جو ہے وہ لینے کے لیے کہ ان کا پیسہ ادھر کتنا پیسہ پڑا ہے اور وہ کیسے وہاں پہ پہنچا ہے. تو پرائم منسٹر آف پاکستان یوسف رضا گیلانی refused to write the letter to the Swiss government to obtain the information regarding the bank accounts of then President آصف علی زرداری. تو پھر جو ہے کورٹ نے ان کو کنٹمپٹ آف کورٹ کا نوٹس ایشو کیا اور ان کو کورٹ کے اندر کام کر کے یعنی بائی فیس جو ہے کورٹ کے اندر کورٹ نے ان کو کہا کہ آپ لیٹر لکھیں. تو انہوں نے پھر ریفیوز کر دیا کورٹ کے اندر. کنٹمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ جو ہے وہ ان کے خلاف سٹارٹ کی گئی پرائم منسٹر کے خلاف. تو ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا فار 5 years ٹو کنٹیسٹ دی الیکشن اینی الیکشن ان پاکستان. تو کیونکہ یو ایس اے کے اندر جو ہیڈ آف گورنمنٹ اینڈ ہیڈ آف اسٹیٹ دونوں ہی پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہاں پہ پھر جو سپریم کورٹ کے جتنے ڈیسیجن ہیں ان کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ پریزیڈنٹ نے کروانی ہے. پاکستان میں ہیڈ آف گورنمنٹ ہے پرائم منسٹر. ہی از دی ایگزیکٹو ہیڈ آف دی نیشنل گورنمنٹ in Pakistan and he is responsible to enforce the decisions to enforce or implement the decisions of the Supreme Court of Pakistan. تو پھر یو ایس اے کا جو پریزیڈنٹ ہے اس نے کانسٹیٹیوشن کو بھی انفورس کروانا ہے اور ادر جو آرڈینری لاز ہیں ان کی انفورسمنٹ اینڈ امپلیمنٹیشن کو کروانے کا رسپانسیبل بھی پریزیڈنٹ آف یو ایس اے ہے. تو
یہ تینوں جو ایکشن ہیں ان کی پرفارمنس کے لیے یعنی implementation of the decision of the courts and enforcement of the constitution and other ordinary laws ان کی پرفارمنس کے لیے he sends directions to the various departments in the discharge of the executive function. He is assisted by یعنی یہ اگر کوئی لا کی امپلیمنٹیشن انفورسمنٹ کروانی ہے، کانسٹیٹیوشن کی انفورسمنٹ کرانی ہے، یا سپریم کورٹ کے کسی اور کورٹ کے ڈیسیجن کی امپلیمنٹیشن کروانی ہے within the United States of America. For that purpose, he sends directions to the different branches of the government, various departments. In the discharge of the executive function, he is assisted by his own cabinet, the members of which are the heads of the various departments. The ministers are appointed by the president and they remain in office so long as he is pleased with their work. The cabinet has been described as the president's family, and he can override their decisions whenever he likes. تو جتنے بھی اس نے ایگزیکٹو فنکشن جو ہیں ان کو ڈسچارج کرنا ہے تو ان کی ڈسچارج کرنے کے لیے he is assisted by the cabinet, that is his own cabinet, and the members of the cabinet are also appointed by the president. They do not come from the Congress. They may be ordinary citizens of the United States of America with certain qualifications and expertise about the department for which he will represent in the cabinet. کیونکہ جو کیبنٹ کے ممبرز ہیں وہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹس بھی ہوتے ہیں اپنے اپنے کے، تو وہ پھر اسسٹ کرتے ہیں پریزیڈنٹ کو in discharging the executive functions. تو ان کی اپوائنٹمنٹ پریزیڈنٹ کرتا ہے تو وہ اس وقت تک کیبنٹ میں رہ سکتے ہیں جب تک پریزیڈنٹ کی ویل ہو، یعنی جب تک وہ چاہے وہ رہ سکتے ہیں، جب وہ چاہے ان کو ریموو یعنی ڈسمس کر سکتا ہے وہاں سے کیبنٹ سے. تو پریزیڈنٹ کی جو کیبنٹ ہے اس کو پریزیڈنٹ کی فیملی بھی کہا جاتا ہے. تو کیبنٹ کے اندر جو منسٹرز ہیں وہ اپنی اپنی منسٹری میں جو فیصلے کرتے ہیں، جہاں تک ان کو ڈسکریشن ہوتی ہے کہ آپ اپنی اپنی منسٹری کے اندر یہ فیصلے کر سکتے ہیں وداؤٹ اپروول آف دی پریزیڈنٹ. تو ان فیصلوں کو پریزیڈنٹ آف یو ایس اے کین اوور رائڈ، ان کو اوور رائڈ کر سکتا ہے پریزیڈنٹ. اس کے بعد ہیں کمانڈر ان چیف. دی پریزیڈنٹ از دی سپریم کمانڈر آف دی آرمڈ فورسز آف دی یونائٹیڈ اسٹیٹس انکلوڈنگ لینڈ فورسز، naval forces and air forces. Like President in Pakistan and India, also Commander-in-Chief of armed forces in their countries respectively. As such, he is responsible for the defense of the country. He appoints military officers with the advice and consent of the Senate and can remove them at will. Although the power to declare war vests in
Congress. Yet the president can make war unavoidable and necessary by his conduct in the administration. As for example, President Truman took police action in Korea without authorization by the Congress. During war, President's military power increased enormously. He becomes the sole in charge of war operations. During World War II, President Roosevelt was given almost a blank check to conduct war on the part of the United States. He became a sort of constitutional dictator. Being commander-in-chief of armed forces, the President of the United States of America cannot declare war against any other country constitutionally. यानी कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर उसके पास ये पावर नहीं है कि वो किसी मुल्क के खिलाफ जंग जो है वार डिक्लेयर कर दे, लेकिन ये पावर क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने कांग्रेस को प्रोवाइड की है, तो कांग्रेस ही वार डिक्लेयर कर सकती है किसी दूसरे मुल्क के साथ. लेकिन हिस्ट्री के अंदर ये हुआ है कि प्रेसिडेंट बीइंग एग्जेक्टिव हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, उसने अपने कंडक्ट के जरिए जो वार है किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ उसको अनअवॉइडेबल कर दिया, यानी कि कांग्रेस उसको अनअवॉइड नहीं कर सकती, अवॉइड नहीं कर सकती थी जो उसका कंडक्ट था प्रेसिडेंट. तो ये आथन ने जो एग्जांपल्स दी हैं वो ट्रूमैन है, एक प्रेसिडेंट गुजरे हैं, तो उन्होंने पुलिस एक्शन किया कोरिया के अंदर विदाउट ऑथोराइजेशन बाय द कांग्रेस, क्योंकि फिर जब वार शुरू हो जाती है तो प्रेसिडेंट की पावर्स जो है वो इंक्रीज हो जाती हैं इनॉर्मसली, यानी कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती हैं प्रेसिडेंट की पावर्स. ही बिकम्स द सोल इन चार्ज ऑफ वार operations. जितने भी फिर वार ऑपरेशन, once the war is declared against any other country, the president of USA becomes the sole in charge of war operations. तो वो एक ही बंदा होता है जो वार के जितने ऑपरेशन होते हैं उनको सुपरवाइज कर रहा होता है, हेड कर रहा होता है, डायरेक्शंस दे रहा होता है सारी फोर्सेस के जो कमांडर्स हैं उनको. तो ड्यूरिंग वर्ल्ड वार टू प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, जैसे मैंने आप कल लेक्चर में बताया था कि ही रिमेन्ड द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए फॉर 4 टर्म्स, यानी वो 16 ईयर्स के लिए प्रेसिडेंट रहे हैं. तो 1951 में फिर नया लॉ आया, अमेंडमेंट आई कि प्रेसिडेंट जो है 2 टर्म से ज्यादा नहीं रह सकता. तो रिसेंट हिस्ट्री के अंदर आप अगर आपने नोट किया हो कि प्रेसिडेंट जो बुश थे बिफोर बराक ओबामा, तो उन्होंने वार डिक्लेयर की थी इराक के खिलाफ विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर. तो उन दोनों ने उस वक्त इतने यानी कि एक मीडिया कैंपेन प्रोपेगेंडा चलाया मीडिया में कि कांग्रेस के लिए उस वार को अवॉइड करना यानी कि नामुमकिन हो गया, इम्पॉसिबल हो गया. लेकिन वार तो हुई इराक के खिलाफ, बाद में बुश और जो टोनी ब्लेयर थे उनके जंग के अंदर पार्टनर,
तो दोनों ने, टोनी ब्लेयर ने अपनी पार्लियामेंट के अंदर और बुश ने नेशनल टेलीविजन, ये चीज दोनों ने एडमिट की और माफी मांगी अपनी अपनी कौम से कि हमने अपनी कौम से झूठ बोला था कि सदाम हुसैन के पास weapons of mass destruction यानी बायोलॉजिकल, केमिकल एंड एटॉमिक वेपन्स हैं। हालांकि उस वक्त जो अक़वाम मुत्तहिदा जो यूएन है, उनका एक अदारा है IAEA, जो एटॉमिक एनर्जी के रिलेटेड मामला को वर्ल्ड में देखता है। तो उनके जो इंस्पेक्टर थे, इंस्पेक्शन करते थे एटॉमिक साइट्स के, वो जाके इराक में उन्होंने 1 महीना इंस्पेक्शन की। पहले भी जाते रहते थे, लेकिन उनको पूरा टाइम नहीं दिया जाता था भाई सदाम हुसैन। तो एक दफ़ा सदाम ने पूरा टाइम 1 महीने का दे दिया कि आप हमारी साइट्स जो हैं उनको चेक कर लें, इंस्पेक्ट कर लें। उन्होंने जब आके UN सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रिपोर्ट दे दी कि Iraq or Saddam Hussein does not have any type of weapons of mass destruction, including atomic, biological and chemical. तो इन्होंने दोनों जो है प्रेसिडेंट बुश और टोनी ब्लेयर ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK, वो इन्होंने ये प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि ये रिपोर्ट जो है दैट इज नॉट ट्रू और करेक्ट। तो अब उन्होंने एक वहाँ पे ओपिनियन मेड कर दी, यानी कि एक राय बना दी, राय अम्मा जिसे हमवार करना कहते हैं, अपने अपने मुल्क में ये इराक के खिलाफ जंग होनी चाहिए। तो फिर उन्होंने की जंग करने के बाद फिर दोनों ने माफी भी मांगी कि हमने झूठ बोला। तो हम being a national of Pakistan, being national of third world country, तो हम इन लोगों को फैसिनेट करते हैं कि दे आर यूरोपियंस जो हैं वो डू नॉट टेल लाइज, यानी वो झूठ नहीं बोलते। हम ये चीज़ें फैसिनेट करते हैं, लेकिन इनका झूठ जो है बुश और टोनी ब्लेयर का, वो उन्होंने खुद जो है एडमिट किया। टोनी ब्लेयर ने अपनी पार्लियामेंट के अंदर और बुश ने नेशनल टेलीविजन के ऊपर। तो इसी तरह हमें भी चाहिए बीइंग लॉ स्टूडेंट्स कि हम ऑर्डिनरी मैन जो है उनसे ज़रा हट के सोचें, अपनी जो है राय जो है हमारी वो रैशनल होनी चाहिए, फैक्ट्स बेस होनी चाहिए, कि हम किसी की भी पीछे यानी आंखें बंद करके उनको फॉलो नहीं करनी चाहिए। उसके बाद है डिक्टेटर ऑफ फॉरेन रिलेशंस। द प्रेसिडेंट represents the USA in foreign relations. He formulates the foreign policy of the United States. He appoints all diplomatic representatives of the USA to foreign states with the consent of the Senate. He receives the foreign diplomats to the USA. He can negotiate treaties and agreements with foreign states in his discretion, but all treaties with foreign states must be ratified by two-thirds majority of the Senate. This is no doubt limitation on his authority regarding the conduct of foreign relations, but the President is not to face any difficulty in the Senate belongs to his party. The President is, however, placed in a difficult position when majority of the Senate is hostile to him. President Wilson's efforts regarding the organization of the League of Nations, for example, were foiled by the hostile Senate. The fact of the matter is that President has position of
advantage in the conduct of foreign relations of the USA. Since he is placed in a key position, he has unfettered freedom to negotiate treaties. It is only in the final stage that the treaties are placed before the Senate. Sometimes it becomes difficult for the Senate to reject them at the final stage. Then the President can enter into executive agreements with foreign states which do not require a ratification by the Senate. President Roosevelt and Taft exercised this power freely. These agreements are no less important than others. The President does not declare the war at his own, but he has the exclusive right to terminate hostilities. Further, the President has sole authority to extend recognition to a new foreign state. It was according to this right that President Roosevelt accorded recognition to the Soviet government in the 1933. It is against on the account of the willful policy of President Truman, Eisenhower and Kennedy that the Communist government of China had not been recognized by the America for long. All these facts clearly show that President of the USA is the dictator of foreign relations. Washington, the first president, proclaimed the policy of American neutrality in 1793. President Monroe enunciated the famous Monroe Doctrine. President Wilson and Roosevelt steered the state during the First and Second World Wars, respectively. President Truman propounded his two-man doctrine. President Ted Kennedy dictated American relations with full vigor and force. President Reagan enunciated the theory of constructive engagement in Africa. तो जो डिक्टेटर ऑफ फॉरेन रिलेशंस इसको कहा जाता है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए को, क्योंकि जो अमेरिकन पॉलिसी होती है टुवर्ड्स दी इंटर वर्ल्ड वो सेट करता है प्रेसिडेंट. इसीलिए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन यूएसए हैव ग्रेट इम्पोर्टेंस इन दी वर्ल्ड. तो फॉरेन पॉलिसी भी इसी ने सेट करनी है. और उसके बाद जो डिप्लोमेटिक जितने सफीर यूएसए के अंदर आने हैं उनको इसने एक्सेप्ट करना है. बाहर जो इसने भेजने हैं उनको विद दी कंसेंट ऑफ सेनेट ये बाहर भेजेगा अपना स्पीच. दूसरे मुल्कों के साथ जितनी ट्रीटीज नेगोशिएट करनी है वो भी इसी ने करनी है. अगर उनको फोर्स ऑफ लॉ मिलनी है आफ्टर दी ratification of Senate with 2/3 majority. तो ऐसा नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम्स के सेनेट जो ट्रीटीज इसने बाहर के मुल्कों के साथ प्रेसिडेंट ने बनाई है कि उनको रिजेक्ट कर दे. तो बेशक वो सेनेट के अंदर उसकी पार्टी की मेजोरिटी हो या ना हो, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास वीटो की पावर होती है. तो प्रेसिडेंट जो है वो दूसरी जो लेजिस्लेशन सेनेट बना के भेजता है तो सेट करता है सेनेट को या कांग्रेस को कि अगर मैंने जो ट्रीटी बनाई है अगर आपने इसको रेटिफाई नहीं किया तो मैंने जो आप जो मेरे पास लॉ भेज रहे हैं मैं उसको वीटो कर दूँ. तो ये है गिव एंड टेक की पॉलिसी बारगेन करते हैं. उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास अनफेटेड पावर्स हैं टू नेगोशिएट ट्रीटीज विद अदर कंट्रीज. तो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जो है इसने जो नए मुल्क बनने हैं उनको भी रिकग्नाइज करना होता है. तो उसमें इसकी एक्सक्लूसिव पावर होती है. बाकी ये आप जो पढ़ेंगे इसको इसमें जो हिस्ट्री के अंदर प्रेसिडेंट्स हैं उनके जो एक्शंस हैं वो डिस्कस किए गए हैं कि उन्होंने क्या किया. तो अभी क्लास रिज्यूम हो जाएगी. अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसमें आप पूछ लेंगे.